ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। जो बच्चे बिल्कुल शुरू से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अभी जैसे 2022 वाला जो एग्ज़ाम आएगा अगले महीने अगस्त में, जो फॉर्म निकलने वाले हैं, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं घर बैठे ही, तो पिटमैन पॉकेट बुक ये ख़रीद लें। इसको कम्प्लीटली इसमें पढ़ाया गया है वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट पर आप जा सकते हैं आराम से। जैसे आप गूगल में जाइए, गूगल में आप जाएंगे तो यहाँ आप लिखिए ज्योति, जैसे ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज ऐसे लिख दिया तो ये तो यहाँ का एड्रेस आ गया। और ये यूज़र लॉगिन जिस पे लिखा है इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ से एडमिशन फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली इस बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेनो कोर्स में जाइए। इंग्लिश स्टेनो बेसिक टू गवर्नमेंट जॉब के नाम से कोर्स है, वो कॉम्बो पैक है, उसमें बेसिक भी है यानी कि पूरी बुक भी है। एसएससी स्पेशल 120-30 डिक्टेशन है। डॉक्टर जीडी बेस्ट की 140-43 डिक्टेशन है। कैलाश चंद्रा की जो टोटल डिक्टेशन हैं वो उसमें आ रही है। जैसे अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ कैलाश डिक्टेशन नंबर 63, तो ये जो है सभी डिक्टेशंस आप सुन करके वहाँ पर जा कर के टाइप कर सकते हैं और अपने एक्यूरेसी को ठीक कर सकते हैं। और बेसिक को भी ऐसे ही बनाया गया है। बेसिक में जितनी भी डिक्टेशंस है उन सब की डिक्टेशन दी गई है, फिर नीचे सॉफ्टवेयर दे रखा है। सॉफ्टवेयर पे जा कर के आप टाइप करके अपनी एक्यूरेसी को जान सकते हो। तो घर बैठे ही आप अपना एनालाइज कर सकते हो और अपनी शॉर्ट हैंड को अच्छा कर सकते हो। ये एक प्रॉपर जो है सेल्फ स्टडी कोर्स है। आप खुद से पढ़ सकते हो इसको, इसमें आप किसी की भी गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो है प्रॉपर तरह से अपने आप को एक अच्छा स्टेनोग्राफर बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो था ये। और जो हमारे पास आगे पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज, फर्स्ट फ्लोर, पवन मेगा मॉल, अपोजिट HDFC बैंक, सुभाष चौक, सोनीपत, हरियाणा, यहाँ के पढ़ सकते हैं। जिनकी रिटर्न की तैयारी वो अभी से लग जाए। अगर 100 की स्पीड का आपको करना है तो अभी से आपको आना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। 80 में तो हम 4 से 5 महीने में हो जाता है, लेकिन 100 के लिए टाइम लगता है। तो उसके लिए आपके पास आउटलाइंस का बैंक एक बहुत बड़ा होना चाहिए। ये वेबसाइट है ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज.com। इस वेबसाइट के ऊपर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मंथली भी अवेलेबल हैं और ईयरली सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। मैं ईयरली को ही जैसे रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उसमें सारे कॉम्बो पैक आपको मिल जाते हैं और आपके एग्ज़ाम तक वो वैलिड भी रहेंगे। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कैलाश डिक्टेशन नंबर 63, और वेबसाइट पर भी इसको लगा दिया गया है, फिर वहाँ से इसको आप टाइप भी कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। You have rightly stated that the principle of this bill has been unanimously accepted by the House, and most of the relevant points have been made out, and that no time of the House should be taken by repeating the same points again and again. One of the points on which I want to lay stress, and which is being disputed again and again by the Treasury benches, is the question of cottage industries. Though you pointed out to them yesterday that there is provision in this bill to take into consideration the cottage industries also, and the Honorable the Deputy Minister realized it again, there was a point raised by Mr. Sidhwa today, and the Honorable Speaker, who was in the chair at the time, said that the scope of the bill is confined only to the consideration of protection to industries as against foreign industries, that is, to give protection to the indigenous industries as against imported goods, and the question of cottage industry does not come
in here. The Honorable Deputy Minister detailed this. Unless protection is given to indigenous industries, we shall not be able to develop industrially. I wholeheartedly support this proposition. I am not against it. When I speak of cottage industries, I do not for a moment think that our country should not be developed on the same lines as the other countries in the world. I want that every villager should have the same amenities that we sitting in this house have. Every villager should have these furnitures, fittings, houses, and so on. The only thing is that the existing economy should not be disturbed and sacrificed before substitute arrangement is made. Before we give protection to any bigger industries, the first thing we should consider is that the materials which are at present being, we should consider is that the materials which are at present being produced in our villages to meet the requirements of our villages and on which the economic life of the villagers rests are properly safeguarded. We should see that we have sufficient quantity of consumer goods to meet the necessities of all people in the country, and nothing is done merely in the interest of 10% of the people at the sacrifice of existing village economy before making sure of some better substitute. I find that at the present moment our attention is confined to the amenities and requirements of a portion of the population only. The other day, my honorable friend Mr. Krishna Machari, whom I regard as a great economist and who knows finance, etc., and looks to the interests of the country and gives very good advice, said that we do not want to go to medieval age and the luxury of yesterday is the necessity of today, and that few articles which we import today from many foreign countries and the few industries which we are starting for recreation and amenities of the people should not be gurged. I agree with him. I do not gurge them, but looking to the condition as it is today and the circumstances under which we are placed and over which we have no control, if we want to develop our country on the same basis as other countries have done industrially and otherwise, we do not have at our command all the necessary materials and we simply cannot do it with the speed we want. We have to depend upon others. So, at least during the transitional period, it may be that the necessities of yesterday you may have to be regarded as the luxuries of today, and for some time have to take a austerity to be squarely distributed. I welcomed this bill most heartily when I went through it, but when the deputy minister was speaking, he probably overlooked or gave scant attention to one point. I am referring to clause 12 in regard to the reference to the Commission on matters arising out of protection. Of the things mentioned,
There are different sectors of the country's economy on which the Commission may inquire and report. Whenever we start new industries and give protection to them, this clause is always neglected. It should not be merely that the central government may also refer, but they must refer to this as one of the conditions under clause 14. When the Fiscal Commission recommends that this tariff commission should take so many points into consideration, the different sectors of the country's economy must be one of the points that must be taken into consideration. The other day, there was a question about the acquisition of the Vijayapatanam shipping yard, when we had to pay rupees 2 to 3 crores for acquiring it. One of the points we took into consideration was the unemployment of 4,000 workers, and for keeping them in employment we suffered a loss in view of the agitation that was carried on. We sacrificed the existing necessary supply of the villagers and threw them out of employment without making any arrangement for their substitute requirements and without providing them with alternative employment. वेबसाइट पे इस डिक्टेशन को लगा दिया गया है। बच्चों, खाली शॉर्ट हैंड लिखने से जो है आपका स्किल क्लियर नहीं होगा। अगर आपको स्किल क्लियर करना है तो शॉर्ट हैंड को लिख करके पहले फिर उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको टाइप करें। टाइपिंग के लिए वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर दे रखा है jyotistenotypingcollege.com। इस सॉफ्टवेयर पर जाकर आप टाइप करें और टाइपिंग करने के बाद अपनी स्पेलिंग एरर, आउटलाइन एरर और टाइपिंग एरर तीनों को देखें और उन पे काम करें, जिससे जो है आप अपनी एक्यूरेसी को सुधार पाएँ और जो है एक अच्छी स्टेनोग्राफर बन पाएँ और क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब ले पाएँ। इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।